आज भारतवर्ष में, और भारतवर्ष जिस राष्ट्र में स्थापित है, यहाँ के राजदूत, यहाँ के कोई विशिष्ट लोग राजदूत बनकर के भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। दूतावास, देखिए इसको दूतावास कहते हैं, कोई नरवास नहीं कहते हैं। दूतावास क्यों कहते हैं? दूत का अर्थ है देवता। इसको दैववास, जो भारत में एम्बेसीज को दूतावास कहते हैं। मतलब हम यहाँ पर मान लिए हैं, भले भी अनुभव न हो, कि हम क्या है, ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर के संतान हैं, इसलिए ज़्यादातर अपने यहाँ ये कहा जाता है कि हम पुरुष हैं। पुरुष टेक्निकल कहते हैं। हम जब समझ लें कि हम ईश्वर के संतान हैं, देखिए जब मन का अधिकार होता है सिर से पैर की अंगुली तक इस पर, तो हम पुरुष न होकर के हम मनुष्य कहे जाते हैं। हमें करना क्या है, इसको समझना है टेक्निकली। मनुष्य क्या है, जब मन के निर्देश पर हम काम करें। ये दूतावास क्या है, पुरुष क्या है, कि जब हम ईश्वरीय नियम में रहें। ईश्वरीय नियम में क्या है, सबको साथ लेके चलना। ईश्वरीय नियम किसको कहते हैं? कई बार आप लोगों ने समझा होगा। ईश्वर कहते हैं हम लोगों की जो कारण शरीर है, उसकी एक चेतना है जिसको प्राज्ञ कहते हैं। सभी प्राज्ञ को मिलाइए तो उसे ईश्वर कहते हैं। तो किसी से अलग होने की तो बात ही नहीं। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, ये मीठा स्वाद है, ये कड़वा है, और ये तीता है, ये खट्टा है। इतने प्रकार के स्वाद हैं। हम इस स्वाद में हैं, हम भूल गए और स्वाद को। अगर ऐसा हम भूल गए, इसका अभिप्राय ये हुआ कि सभी प्रकार के स्वाद के प्रति हमारा सम्मान एक समान नहीं है। हम मीठा खाते हुए भी याद रखें कड़वा स्वाद कैसे होता है, तीता कैसे होता है, खट्टा कैसे होता है, कसैला कैसे होता है। एक स्वाद का अनुभव करते हुए सभी स्वाद की स्मृति बनाए रखने में हमारे अंदर ईश्वरीय भाव जगता है कि हम सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता है। जनरली होता क्या है, अगर किसी को मीठा बहुत पसंद है, मीठा को खाते ही वो भूल जाता है। चींटा की तरह, चींटा गुड़ में लिपट गया है, उधर समझा रहे हैं, गुड़ को दबा दिए, चींटा भी मरा गुड़ के साथ। या एक मधुमक्खी है, किसी फूल पर बैठी है, पराग ले रही है, कोई एक जानवर आया, पूरे फूल को खा गया, मधुमक्खी को भी खा गया। ऐसे होता है। हम किसी एक मीठे में लिपट गए, मनपसंद की मिठाई आई, उसको खाए, लगा कि स्वर्ग है, बाकी स्वाद भूल गए। ऐसी स्थिति में हम मनुष्य की तरह कार्य करते हैं, और जब मनुष्य की तरह कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट, हमेशा डर रहेगी, भय रहेगा। तो ये कैसे होगा कि हम मीठा खाएं तो उस समय कड़वा भी याद रखें, तीता भी याद रखें, खट्टा भी, कसैला भी। तो जितने प्रकार के अनाज और फल हैं, खाते समय उसके स्वाद से जुड़ी स्वाद की अनुभूति परब्रह्म की अनुभूति है। स्वाद की अनुभूति करके उसकी निंदा न करना, उसका स्वागत करना, उस वस्तु से जुड़ने की क्रिया है। हम एक वस्तु से जुड़े, दूसरे से न जुड़े, तो हम मनुष्य की तरह रहते हैं। हम सभी से जुड़े तो हम ईश्वर की तरह हैं। सभी से जुड़ने पर एक ईश्वर कैसे रहते होंगे, आप जुड़ करके देखिए।
ऐसे में एक चीज कोई देख रहे हैं, बढ़िया फूल खिला है, और कितने प्रकार के फूल होते हैं देखा होगा हम लोगों ने। एक फूल में ऐसे एकाग्र हो गए कि बाकी फूलों को भूल गए। कल्पना करिए बढ़िया गुलाब का फूल है या कमल है, हम उसको देख रहे हैं, उसी समय जितने फूल हैं सबका चित्र मन में बना लीजिए। तब हम जिस तरह का जीवन व्यतीत करेंगे उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपनी संतान उत्पन्न करके, जो एक कहा जाता है ना कि हम पितृ ऋण से मुक्त हों, हम पिता थे तो हम बच्चे पैदा करें तो जो एक ऋण है खत्म होगा, लड़का लड़के को जन्म देंगे तो एक ऋण है माँ का ऋण खत्म होगा। ये लोगों ने बनाया है, ये सही नहीं है। ईश्वरी भाव में आएंगे तो सभी बच्चे अपने हैं, यहाँ तक कि बड़े छोटे किसी उम्र के हों, इतने बच्चे हैं तो स्वयं हम शादी करके विवाह करके हम संतान को जन्म दे, अपना बच्चा हो, ये भाव खत्म हो जाता है। तो ये मनुष्य के अंदर भाव होता है कि अपनी जगह हो, जमीन हो, घर हो, मकान हो, कार हो, शादी विवाह हो, अपने बच्चे हो। जब ये सब है तो हम मनुष्य के भाव में हैं, और इस भावना में हमें कष्ट ही कष्ट होता है। तो क्या करें फिर, हम शादी न करें क्या? हम ये नहीं कहते। अगर शादी किए भी है तो आपकी पत्नी होगी, आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, आपकी मित्र होगी, आपकी गुरु भी होगी, आपके शिष्य भी होगी। जब अपने पत्नी को इस तरह से मानेंगे तो उसके साथ कोई झगड़ा होगा ही नहीं, और किसी प्रकार के उसके साथ एंजॉयमेंट की प्लानिंग नहीं होगी कि पत्नी को ऐसे प्रेम करते हैं, नहीं उसके साथ मज़ा नहीं आ रहा है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, ये नहीं करती है, चाय अच्छा नहीं बनाई, और तरह तरह से जो पत्नी और पति के बीच में एक आनंद की अनुभूति की कल्पना होती है, वो मनुष्य करता है। पति पत्नी के बीच में जो ज्ञान की कल्पना होती है कि हम कैसे दोनों मिलकर के हम ये यात्रा शुरू करें कि हम सर्वव्यापी, आप सर्वव्यापी, एक ऐसे बिंदु पर जाएं जहां दोनों एक हो जाते हैं, दोनों ही रहते हैं। जैसे एक फिलामेंट है, ये बल्ब है, ये फिलामेंट है, यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ईश्वरी भाव क्या है कि हम सब किरणों के साथ रहें। कैसे रहेंगे? और मनुष्य का भाव है कि अगर एक किरण में गए तो वहीं एकाग्र हो गए, बाकी को भूल गए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि ये किरणें जहां से आ रही उस जगह पर पहुंचिए। अगर आप फिलामेंट के अंदर हो गए तो सब किरणों के साथ हो गए। तो ऐसा कौन सी क्रियाओं का अभ्यास है कि हम करें? ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं, तारामंडल है, सौरमंडल है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु है, मानव हैं, कितने प्रकार की मानव की सभ्यता है, कितने भाषा है, हम सबके साथ कैसे जुड़े आए हों। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। अपने सिर और रीढ़ को पकड़िए आप। यह जब मेडुला का क्षेत्र है, अगर हमारी एकाग्रता यहाँ बढ़ने लगी, यहाँ एकाग्रता तब बढ़ेगी जब भ्रूमध्य पर एकाग्र होंगे। भ्रूमध्य पर यहाँ एकाग्र होते ही एक नियम है कि हम रीढ़ में भी एकाग्र होंगे। इन सब की वजह से अपने अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, उन क्रियाओं से जुड़ना है। जैसे एक श्वास की क्रिया है, तो भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के मेडुला कहाँ है, ये रीढ़ कहाँ है, याद रखते हुए श्वास को अनुभव करें। और श्वास हर जगह से जुड़ा है, तो और अच्छा हो कि हम सिर से पैर की उंगली तक सब अनुभव करते हुए भ्रूमध्य कहाँ है, मेडुला कहाँ है, श्वास कहाँ है, अनुभव करते रहे। तो हमें इतना ज्ञान होगा कि हम कैसे पेड़ों की रक्षा करें, कैसे पहाड़ की रक्षा करें, कैसे समुद्र की, नदी की, तालाब की, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव की। मानव में दो वर्ग हैं, एक है देवता की तरह, एक है सामान्य मानव है। जब सबके रक्षा के नियम आ जाते हैं और सबके प्रति ऐसा प्रेम हो जाए कि ये सभी रचनाएं परब्रह्म से ही निकली है, किसी की महिमा किसी से कम नहीं है, तो हम ईश्वरी भाव में होते हैं।
जब ईश्वरी भाव में होते हैं तो जो कुछ अपना रूप है ये दिखाई पड़ता है कि हम पुरुष हैं। ये इसे कहते हैं ईश्वर की संतान। लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, that we call embassies, we call ambassador. Each nation want to represent that I am omnipresent nation. Therefore, if India try to experience this ultimate truth, I am America also, Canada also, all nations of the world, they belong to my nation. Now how to practice this? Then we have established dutavas, embassies. We never said that we have established man area where human being lives. No, Dut lives. Dut means angels. Dutavas means embassies. Where ambassador lives. What do you mean of ambassador? Ambassador is called who is ambassador of God. Like Jesus Christ was ambassador of God. Kabir Sahib, Guru Nanak Dev, ambassador of God. Mahatma Gandhi was ambassador of God. Like this. And therefore each and every nation is having intuitively this desire, I want to become all nation. Therefore we are not having sufficient love to merge with the all nation. Therefore we have established a certain area within a nation. India, Dutavas is in USA. In each province we have a portion of the land which represents India. In the same way, USA, Canada, each and every nation having some small area in the India, that area represents that nation. This is a US embassy, this is Canadian embassy, like this. It represents even this earth is invoking desire. I want to be called, we all are one, there is no division. What we have divided, like different continents, different nations, this is unnatural. What nice concept is that? But slowly you will realize this dutavas will expand. What is the embassies of the India in USA, it will start expanding it. One day it will cover all America. In the same way, American embassies in India, it will start expanding it, it will cover all India. Then USA and America will be one. At present, a portion of US, a portion of India is having togetherness. That is good. But we want to expand more. Therefore, when we have this desire to accept all, that is called Ishwar, consciousness. What is the meaning of Ishwar? This is technical name. Each of us is having this physical form, visible form. Its a consciousness is having one technical name, we call it Vishwa. This Vishwa is a technical name, it is a consciousness inside which brings a realization of animation, hearing, touch, vision, taste, smell, thinking, logic, many things. Then all wish together is called Virat. Virat is also a technical name. Virat means I accept your liking. I don't have problem. You want rice and that person want roti. All right, we'll make both. Somebody wants saltless food, somebody wants with salt. All will be available. Then this is called now, this wish has transformed into Virat. In the same way, each of us is having one astral body. Consciousness of that astral body, we call it Tejas. All Tejas together, we call it Hiranyagarbha. In the same way, each of us is having one causal body. Causal body consciousness is called Pragya.
Altogether, Prag is called Ishwar. Ishwar means accepting all, no discrimination. Have this example, we like sweet. All right, then this is bitter taste. This is the hot taste like chili. This is sour taste. Like this, there are many tastes. If you are liking sweet, enjoying sweet, at the same time you must have the memory of all tastes together. Then it will work like Ishwar. How to work like Ishwar? Very easy. If you are eating sour things, at the same time remember what is the sweet taste, bitter taste, pungent taste, astringent taste. The moment you have the memory of the all tastes at the same time, you will work like Ishwar. You will never harm anyone. You will know the science how to protect everybody. How easy to work like Ishwar. Try to have the next thing. If you work like Ishwar, then what we call Purush. Purush is called the child of God. Better we should say the son of God. But we have fight between male and female. Then they object, why not daughter of God? Therefore, that son of God means this you have to write like this, S-U-N. This is the son of God. Means I am having message of God, then I represent, I radiate message like sun, without discrimination. Therefore, son of God, we should write like this. Why we are going to write like that? In that there is a fight. The son and daughter, male and female. All right. Now, we represent Purush. How to work like son of God. How to work like Ishwar. Take the example. This is the bulb. This is the filament. This is the rays are going out. If you are working like a human being, then you are concentrating on one rays. You forget other rays. All right, then we are working like a human being. We will have all kind of problems, all kind of fight, stress, fear, everything. But I want to work like son of God. As my father, Ishwar, is working, I want to work like that. Then you have to collect all rays together. How to collect all rays together? I am standing here. Very difficult to cover from here to here. No, there is a way. This is the nucleus. From here all rays are going. Let us pay attention here. Put your consciousness inside filament. How to do that? Come within. This is our head and spine. This is the medulla. All activities of the body is governed by here. If brain is working, it is because of this. If damaged medulla, brain will not work. If you damage brain, still medulla will work. Medulla is area which cannot be operated by any surgeon. Therefore, if you learn concentration, how to locate this medulla, you cannot locate medulla until you concentrate on point on forehead between eyebrows. Place concentration of mind on point between eyebrows. At the same time, place concentration of mind on space in front of forehead. Because this works, it cannot live without the spine. Therefore, within there is a spine. Spine is essential tool. Without this, medulla and this bhuma doesn't know to exist. Then we have to feel position, place of a spine. All right, we got a technique. Where is medulla? Where is spine? Where is bhumad? But all these things are having some activities, animation, like breath. And you have to feel breath, paying concentration of mind on bhumad, appreciate everything what you see, locate where is your medulla, where is head and spine.
And what you practice is presence of God, means presence of knowledge of all kinds, power of all kinds, eternal peace, bliss, immortality. Then you will get the technique how to work like Ishwar, how to experience we are son of God. All right, now we got a technique. We are very happy that we have technique. Now let us try to make a law in the nation. How nation should work. We say we have a capital, like India capital is Delhi. Uttar Pradesh is the one province, its capital is in Lucknow. USA capital is Washington. Canada capital is Ottawa. Like this. Now I cannot feel happy and joy until nation is happy. If nation is happy, then we will be happy. Otherwise not. So how to make a nation happy? Now we have decided to work like Ishwar. When I am talking, I am having awareness of head and spine, concentration of mind on Brahman. I am observing breath, feeling head and spine more and more. Then we get a certain idea how to make constitution of nation, how to make different principles, how to live in harmony. We do not want fight among. We do not want any inhuman activities. I want to live like sons of God. Sons of God means do not just forget. This is sons of God. This is sons of God. Okay, all right. Let us decide. Okay, we are working, we are trying and trying and trying. We never feel defeat. Banat ban jai. We all group decided to work like son of God. Then we got an idea. What is the idea? Oh, this is head to toes is everything. This is called mini cosmos. I want to help stars. I want to help solar system. I want to help mountain, ocean, lake, river. All right? How to help them? We are trying to live like Ishwar, trying to live like Son of God. Then we get an idea. All are inside. Until we experience their presence inside, we cannot make a law. If we are going to make a law, how to make nation happy, it is only possible when we accept head to toes is mini cosmos. It is mini universe. Within all stars, solar system, galaxies, within all plants, animals, human beings, all varieties of human beings exist. All right? Good. Now let us work more. Automatically knowledge will come. Then we start realizing, yes, now I have an idea. Now I start experiencing the nucleus inside. This is the Kuta skin. Then I start experiencing, yes, when I am practicing how to live like sons of God, we have decided it, then we start realizing the whole cosmos is packed within. This is the sum sketch, some diagram, which is going to represent how the cosmos is inside. This is the number 1 first creation, number 2 second, number 3, number 4, number 5. This got 5 koshas, 5 seeds. Koshas, Sheath, seeds. There are 5 areas, 5 fields like this. Therefore, now we got a point. Now we are concentrating on head to toes. Now this is called the outer covering. It's called the some creation like a stone, mountain, ocean, lake, river, solar system, galaxies, this earth, everything.
which is the nearest. This is the earth. Now we got a point of how to love earth. Because existence of earth is because of sky, because of air, because of sun, because of the many things, because of the water. This earth is having solid structure. All right, then what we have to do? How to show love with the earth? And this is a portion of earth. Then you have to dig it, plow it, do whatever, so that sky should go inside, air should go inside, sunlight should go inside. Then we are making this earth happy. In the short, now you are making earth fit. How to grow the grains, how to plant the fruits, how to grow vegetables. Therefore, if we are not making a law in the nation that each and every person should work in the field, maybe Prime Minister, President, Governor, Chief Minister, or MLAs, MP, Member of Parliaments, doctor, engineers, judges, everybody has to work on the earth, to love the earth. How you will love the earth? Try to work. No, I am very great. I am having servants. I pay them. It will not grow. You have to love personally. As you are mother, you have baby. You have to love your baby. No, I am going to appoint a person. I am going to roam in all over the world. I have given birth to the baby. This baby is looked after by this. It is not. This is called inhuman activity. Therefore, nations, parliament should work in this way. Constitution of nation should be rearranged. That each and every person should be compulsory to work on this earth. Minimum 2 hours. Why 2 hours? Because 2 hours to work in such a way that internal sun should be awakened. How to awaken internal sun? Moment you get a heat. Now working, I am feeling hot. I am feeling hot. What? I am just digging the ground, I am feeling hot. Then you should see the water also. You need water. I am working, get water. Water came sweating. Good. Then I have generated heat. Sun is working. Water is working. Then at the same time when we work, automatically we have deep breathing. Inhalation, exhalation, both are now different. Moment you work, at the same time, naturally, automatically, you will see the sky. You will be in the open place more. Any person working the field, without any doubt, that person loves to see the sky. Therefore, when you are working in the field, you will get an opportunity how to experience effect of sun inside in the form of a heat, what you feel, how to create a water element. Now we get sweating. In the same way, all 5 elements, sky, air, water, fire, earth, that is called the Annamaya Kosh, is charged. Without Annamaya Kosh charge, it will not exist. Therefore, this law that each and every person of the nation should work minimum 2 hours on the ground with their own hand. But there is no law in parliament. At the same time, second is called the plant kingdom. This fourth is called the plant kingdom. Without plants you cannot live, human being. Now with your hand you have to serve plant. You have to grow some vegetable, you have to plant some trees, you have to give water, you have to give manure. Try to select something working for the plants. Then we need animal kingdom. Then you need to help animals. You should make a forest. You should make a place where animals should live, should not damage each other. Suppose that I am bull number 1, that is bull number 2, we are going to damage each other. We cannot fight to create a death in each other. That is rare. Vegetarian animals, they don't fight. There is no brutality in that way. They fight, little bit fight. Therefore, carnivorous animals have different forests and herbivorous animals different forests. When
animal which are herbivores, they do not eat meat. When they die, put their dead body in the carnivorous forest. If carnivorous forest, they die, then they are being eaten by worms and other things. In this way, animals will not have fear. They will enjoy their life. You may be tiger or lion or anything. You are cow, buffalo, goat, sheep, anything. But there is no law in this parliament. There is no law in this constitution like this. Then constitution is incomplete. Therefore, we human being. Next is called the human being. The second, how to love human being. What I want for me. The same thing I have to provide you. I want knowledge, how to maintain my existence. I will try my best, you should get the same knowledge. I want something to have joy with the knowledge. I have to create a condition, you must feel joy with the knowledge. By reading a book, giving exam, students have fear. If in a reading book, giving exam develop a fear, that is not knowledge. Therefore, we want a knowledge inside. Okay, all right, how to get it? Kriyayoga meditation. In order to love human being in the correct way, you have to work in such way that Kriyayoga should be spread. Each and every person's home, there should be Kriyayoga. Each and every person should know Kriyayoga will invoke knowledge from inside, which will give you joy. When you read a book and give exam, you have fear. I will be pass or fail. That is not the knowledge. In this way, when we start loving human beings and animals and plants and atom molecules, like the mountain, we are doing very much bad things, cutting the mountain and making the stones for the road making, for the building making. This is violence. You can make your house set up from the clay where you are. You want it strong, try to make it ripe. Have such big forest, you will have the dry wood. You will have animal, you will have cow dung. You can get the proper heat. You can take the coal. By using them, you can make a clay cake, ita, bricks. You can make a road, you can make a house. But there is no law in the constitution. What is constitution we have? Inappropriate, incomplete. Therefore, they did not tolerate Gandhiji. All wanted Gandhiji should go. Not only Godse. Everybody, majority of the leaders and who are fighting for freedom, they are fighting for freedom not with the love, with the hatred. Gandhiji was having the all kind of this monument which shows complete love for the British, for the Mughal, for Hindus. Therefore, they did not listen and they get freedom and flag hosting was there, India was free. Then what Gandhiji said to Jawaharlal Nehru? I was knowing this, but I did not say until I get a book. Therefore, book is just giving all the prayer meetings of Gandhiji. Then 7th November, evening prayer. After evening prayer, he was giving little talk. Then he said Jawaharlal should resign and Patel is not fit to become Home Secretary. We want person from the villagers. They don't have power to love villagers. They think they are great, villagers are not great. When he said that, after that all decided, now we do not need Gandhiji. But they were knowing that 6 times Gandhiji was attacked by Godse party. They were knowing something may happen any time. But they did not put a law to investigate each and every person. Who are going the prayer, they should be examined. They should not have any weapons. They can do it. But they never did it. And when Gandhiji received the bullet, it was bleeding, still he was alive. Nobody immediately died.
See anybody just got the injury, they die immediate when truck is over the body, or body is crushed then. If they give bullet, immediate death is not there, person will survive at a half an hour, 1 hour, until they're shooting in the medulla. He was shot at the chest, he fell down, he was breathing, but doctor came so late. But nobody knows this history. Therefore, our Constitution of India is incomplete. The parliament system is incomplete. How to become MLA, MP is incomplete law. How to become a judge is incomplete law. How to become advocate and doctor, the incomplete law. Therefore, we need a change, complete change. And who will make a change? Citizens of the nation who are living, majority are in villages. Therefore, all villages person, when they join together, we got freedom. It is not, we did not get freedom because Delhi joined, Ahmedabad joined, or Bombay joined, or Calcutta joined. No. When Champaran joined, the big shaking movement, then we should know we have to give importance to the all villagers. We have to give first importance for the food, agriculture. But all persons who are working as a farmer, they are poor. They cannot purchase computer, they cannot purchase car, they cannot have good houses. Who made that constitution of the nation? It is our duty to spread the message of love for all. We should show the love. We should love the earth as we design, we imagine how to love God. We have to love tree, how to love God. We have to love animals, human beings, as you think how to love God. If with the love of God you have to love all creation, then you will know how to make constitution of nation. Then how to make new parliament. By making good building, you cannot have good parliament. You live in the golden palace. By living in golden palace, you cannot become good person. For a good person, you need the real knowledge that we are children of God. Therefore, this 26th January, it gives a message to the all persons of the world, that in all over the world, whatever they have made a law to run the nation is incomplete. Therefore, India has got an opportunity, because Lahari Maas is here, Mahavatar Baba, Gyanatar Krishagiri, Paramahansa Yogananda from here, many realized master, maximum number of avatars is in India. They have vibration, this clay is having vibration. We can smell that vibration by practicing Kriyayoga meditation. They had to make new constitution of the nation. You see, it is tough, it is not tough. It is very easy. Just practice Kriyayoga. Try to learn how to practice Kriyayoga all the time. When you are hearing, when you are talking, when you are tasting the food, when you are using eyes to see, when you are using nose to smell, using legs to walk, using arms to work, using mind and reasoning to think. Therefore, during all activities, try to feel head to toes, it is presence of God. God alone exists. It is God who has become your form. Don't say that you are bone and muscles, you are human being. Forget it. Moment you will say you are human being, then you will have a wrong constitution of the nation. Nation will not grow. We are cutting the green trees. Why? We are killing the animals, slaughterhouses. This is not the correct thing. These animals and plants, we are protected, but we are not protecting them. Therefore, from today onwards, in order to make all nations a happy nation, in order to make new constitution which should be followed by all nations, like all nations, they follow how to have good breathing, how to eat good food. This every nation is following. We want nutritious food. We want to increase immunity, vitality. Everybody has desire. Why they don't have this desire? Make a best constitution that will be loved by all nations. And who is going to make it? We all together. I am not alone, you are not alone. When have joint effect, it will come out. Otherwise, Swami Yukteswar has made constitution like holy science. Who is understanding it? Therefore, if one person is knowing, is not sufficient.
We all have to practice. Therefore, we are celebrating Ganatantra Divas, Republic Day in India with this message, what I have given today. Mahatma Gandhi, after evening prayer, he said, Jawaharlal should resign. Patel is not fit to become Home Minister. Therefore, he wants different kind of things. Then all decided now we cannot tolerate Gandhiji. Therefore, no arrangement was made to protect Gandhiji. When he was shot, no immediate doctor came. It took time. This is nobody is knowing. When Gandhiji was shot, very good smile, he blessed. He blessed, but no photo is available. I have got that photo that was published in the newspaper in Maharashtra. Nobody published that photo. You see how they try to hide the glory of Gandhiji. How you can hide glory of Gandhiji? When Paramahansa Yogananda declared, just before entering to Mahasamadhi, Mahatma Gandhi, great prophet. Great prophet means you can imagine who is the highest prophet, highest avatar. Paramahansa Yogananda said that. I can read again today. Because I am living in India, for India. I am not living in India for anything else. You know, America loves me very much. They have given me own visa, highest honorable visa. In Canada, they have dedicated 30 acres whole property for me, for the Kriyayoga movement. We have got good palace type home there, good meditation hall. No, but in this life, I am meant to be in India. Because when India will rise with all nations together. India is not selfish nation. India want to feed all people of the world. Therefore, India just create a condition that all great persons who are loving to work, they went to the US, Canada, Australia, Europe. They are on the top position. India demonstrated top position in all walks of life. Therefore, my work in this life is India. Therefore, let us decide we all together. Make India great. India will demonstrate I am rising up with all nations. We are knowing how to make good constitution. That constitution will be loved by all. Why we love the math? How we love the medical science? We love good nutrition. We love good breathing system. In the same way, everybody will love that constitution. But because Gandhiji was shot, that constitution he was thinking to make it, he wrote something, and they made it disappear. They removed those pages. Suppose that you say me, you have to have good life. Acha, I will kill you. You want to tell me good life? I have to live. But others are telling, now all are telling I have to live good life. What life I am living, you do not like it. If you do not like it, then my time has come, now I have to go. Therefore, Gandhiji has said he wanted to live 126 years to make constitution of the nation, to make all villages rich villages, to make the whole India as a model nation. But the citizen of India was not able to protect Gandhiji. Therefore, you see, who can deny the glory of Paramahansa Yogananda? He left body remains undecayed. It proved that he was angel. It proved that he was totally, perfectly realized master. Then what Paramahansa Yogananda said just before entering to Mahasamadhi, on 7th March 1952, I have repeated it 1,000 times. And he was a guest speaker where all foreign delegates, the persons from all embassies of the 50 nations were there. They were having some ceremony. In that, Indian ambassador has to be honored because he visited Los Angeles. In that, this Paramahansa Yogananda was key speaker. Then what he spoke, I am not here in an advisory capacity. So I will relate a few snatches of my experiences. I remember my meeting with Mahatma Gandhi. The great prophet brought a practical method for peace. How to get peace, how practically possible to get peace. It's not imaginary peace.
that should be followed by all nations. If Paramahansa Yogananda said, you are the great prophet who is just telling that Gandhiji is not good. If anybody is telling Gandhiji is not good, that is danger for him, remember it. If you say Ram is not good, you will have danger. Krishna is not good, Buddha is not good, Mahavir Swami, Kabir Sahab, Guru Nanak Dev Ji, Sant Ravidas, Jesus Christ, all were good prophet. Therefore now, our responsibility is this. Practice Kriyayoga sincerely to change the nation, to make it the best nation where mountain is protected, river is protected, lake is protected, and ocean is protected, everything protected, plants and animals. It is easy to do. How you will do it? You see, a small child, easy to become doctor. Let child should become big. Everything easy to do. Practice Kriyayoga more and more, we will be able to do it. I अच्छी तरह से समझाएं कि आज गणतंत्र दिवस है. देश के सभी मनुष्य का महत्व बहुत अधिक है. किसी भी मनुष्य का महत्व कम नहीं है. इस योजना के अनुसार एक एक मनुष्य को गण कहते हैं. तो गणतंत्र दिवस का अर्थ है कि एक ऐसा ज्ञान हो, दिवस का मतलब ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान हो जिसमें राष्ट्र के सभी मनुष्य को सुखी किया जा सके. कहते संभव नहीं है. कैसे कहते संभव नहीं है? हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि पैर भी सुखी हो, हाथ भी हो, आंख, कान, हड्डी, मांसपेशियां, कार्टिलेज सब सुखी हो. ये संभव है कि नहीं? अगर ये संभव है कि सभी अंग सुखी हो, तो ये भी संभव है राष्ट्र के सभी लोग सुखी हो. तो इस तरह का कोई एक सिस्टम बनाइए जिसमें सभी लोग सुखी हो. उसको गणतंत्र दिवस कहते. दिवस कहते ज्ञान को. जो गण का तंत्र है, जो मानव समूह है, इसके लिए ज्ञान चाहिए. दिवस, दिन कहते ज्ञान को. कौन सा ज्ञान? एक ही तो ज्ञान चाहिए कि हम सुखी हो, हम बीमार न हो, हम थके न, हम चिंतित न हो, हम गरीब न हो, सारी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाएं, और हम सब ऐसा रहें कि बिना एक दूसरे को रह न पाए. इतना प्रेम करें कि बिना आपके जीवन नहीं. इसी सब चीज़ों को मिला करके जो आइडिया है, थॉट है, ये गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है. चलिए, गणतंत्र दिवस हुआ, एक नियम बनाया गया देश का ऐसा चले. जो नियम बनाया गया, वो नियम कैसा बनाया गया? नियम तो ऐसा बनाया नहीं गया कि हरे पेड़ न कटे, कोई जानवर मारे न जाए, कोई आदमी भूखा न रहे, किसी में झगड़े न हो. यहाँ तो मुकदमे पर मुकदमे, FIR पर FIR, झगड़े पर झगड़े, गरीबी इतनी कि सबको खाने की सुविधा नहीं. तो कहाँ हम ऐसा देश बना पाए? इसी जो गांधी जी ने कहा था कि अभी आज़ादी रुक के लीजिए, अभी आप लोग तैयार नहीं हैं. सब लोग नाराज हो गए. कब से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं? 1857 से. और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम आज़ादी देने को तैयार हैं. तो महात्मा गांधी कहते भी तैयार नहीं. तो इनको लोग इग्नोर करना शुरू किए. फिर जब जिस दिन आज़ादी का झंडा फहराया गया, गांधी जी कलकत्ते में, जिसको अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, लेकिन शुद्ध होते जो सफाई करता है. सफाई करते दो लोग, जिसको धोबी कहते हैं, जिसको जमादार कहते हैं. दोनों पूज्य है. ये जो सफाई करे पूज्य होता है. तो महात्मा गांधी धोबी के यहाँ थे उस दिन. वही मौन व्रत में चुपचाप वहीं आराम कर रहे थे. लोग आज़ादी का झंडा फहरा रहे थे. गांधी जी से कहा गया दौड़ करके, गांधी जी आज़ाद हो गया देश. गांधी चुप रहे, बोले ही नहीं. कहते आज़ादी कौन सी आज़ादी जहाँ इतना मारकाट हो. तो 7 नवंबर की शाम की प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहरलाल को रिजाइन करना चाहिए, वो फिट नहीं प्राइम मिनिस्टर होने के लिए. यहाँ क्या प्रचार किया गया कि उन्होंने जवाहरलाल को प्राइम मिनिस्टर बनाया. कितना झूठा प्रचार. जैसे हमारे बारे में झूठा प्रचार कि हम सब कब्जा कर रखे हैं झूसी. ये कोई योगी सत्यम हरे पूरा झूसी ही कब्जा कर रखे हैं. लगता है पूरा पृथ्वी हम ही कब्जा करके बैठे हैं. और अभी कहते हैं कि इस जमीन को खरीद लीजिए,
यहाँ के रेट पर कोई नहीं आएगा खरीदने। तो याद रखिए, जैसे आपके बारे में गलत प्रचार, हमारे बारे में गलत प्रचार, एक झूठी में है, कहते हैं अरे वो सभी आतंकियों के सरगना है, सभी आतंकी को लोग जेल में भेज सकते हैं, इनको तो कोई छू ही नहीं सकता है। ये प्रचार, ये प्रचार है कि हम पैसे के बल पर सब काम करा लेते हैं। एक भी पैसा किसी को नहीं दिया गया आज तक, 1 रुपए का ब्राइब नहीं दिया गया। हाँ, कोई आता है तो हम कभी कभी व्यस्त रहते हैं कि चाय भी नहीं पिला पाते हैं। जैसे इसके बारे में गलत प्रचार से, गांधी जी के बारे में सारा गलत प्रचार है कि उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने कहा था कि नेहरू फिट नहीं, ही शुड रिजाइन। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कहा, मिस्टर जवाहरलाल भी नहीं कहा, गुस्सा थे वो, कहते जवाहरलाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब पटेल भी फिट नहीं है, क्योंकि ये अब देश के नहीं रहे तो शहर के हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिक कहा जाता है, नागरिक थोड़ी है, हम भारतवासी हैं। भारतवासी क्यों नहीं कहा जाता है? इस तरह से देखिए, गांधी जी की इच्छा पूरी नहीं हुई। देश को सुखी करना चाहते थे, एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो संविधान सबके लिए अच्छा हो। ऐसा नियम बनाना चाहते थे यहाँ FIR ना हो, मुकदमे न चले, झगड़े ना हो। ऐसा नियम बनाना चाहते थे, खूब अच्छी खेती हो, सबके पास खाने पीने का फल और अनाज अच्छी तरह से हो। ऐसा कानून बने कि एक दूसरे से कोई झगड़ा न करे। लेकिन उनकी कहाँ चली, उनको तो लोग सब सोच लिए कब जाना चाहिए। जब गोली लगी तो कितने लोग खुश हो गए होंगे। तो अंत में इतना बड़ा काम किए, कुछ तो रोएंगे ही। अरे एक बेटा है, जब बाप 2 भाइयों में शंका होती कि इसको ज़्यादा प्रेम करते हैं भाई, इसको कम, तो बेटा गोली मार देता, तब भी वो रोता है, करे हमारे बाप थे चले गए। उसको याद आती है, वो गोली मार करके भी रोता है। कोई माँ को गोली मार करके लिपट के रोता है, क्योंकि याद आती कि तो माँ थी हमारी। ऐसे गांधी जी कि जब गोली लगी जो लोग रोए ना, नाटक था वो, कोई रोया या नहीं। गर्व से कपड़ा पहन के चल रहे हैं उनकी शव लेकर के। अरे उस दिन तो एक कपड़ा पहन लेते सब। इससे आइए ये दोबारा गलती ना हो, एक नया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें पूरी जमीन भारत की उर्वरक हो जाए। यहाँ पे इतने फल हो, इतनी सब्जियाँ हो कि सबको आसानी से मिले। इतना यहाँ टेक्नोलॉजी हो, सबके घर में कंप्यूटर रहे, सबके पास कार रहे, मोटरसाइकिल भी रहे, जिसकी आवश्यकताएं हो सबके घर में हो। हर घर में बिजली हो, हर गांव में सड़कें हो, ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा से राष्ट्र संपन्न होता है। ये सब नहीं है। ये सब नियम बनाना आसान है, कठिन नहीं है। भाई हमको ताला खोलना है, चाबी यहाँ डालना है, हम यहाँ डालेंगे तो नहीं खुलेगा ना। नियम बहुत आसान है, लेकिन नियम कैसे बनाया गया? हर देशों का संविधान लेकर पढ़ा गया, नकल करके लिख दिया गया। ऐसे थोड़ी संविधान बनता है। मैं एक बार गया अमेरिका में कहीं पर, वो आए, कहते हैं देखिए ये सब घर का बना हुआ है जो आपको खिला रहे हैं। क्या था मालूम था? बाजार से खाना ला करके वहीं इकट्ठा करके वो सब प्लेट में सजा दिए थे कि ये यहाँ जो सजा रहे हैं यही हमारा घर का है। तो वो लोग इस तरह से समझते घर का है। बाहर से लाए और ला करके यहाँ उबाल दिए, बना दिए, घर का है। इस तरह से याद रखिए कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए संविधान में है ही नहीं। इससे लड़ाई झगड़ा है, इससे कोई धनी होता जा रहा है, कोई गरीब होता जा रहा है, सुविधाएं नहीं है। तो हम क्या करें? इसके बहुत आसान है। आज से अपने को आप मानिए कि आप ईश्वर की संतान हैं। आप ये मत मानिए कि आप मनुष्य हैं, भूल जाइए। हमारे यहाँ है ना कि पुरुष, कहते ना कि पुरुष और स्त्री। पुरुष क्या है? होली साइंस में पढ़िए, पुरुष को ईश्वर की संतान कहते हैं। ईश्वर की संतान हम हैं, हमारे में सारे गुण ईश्वर के होंगे। ईश्वर अमर है, तमरता का नियम अंदर में होगा। ईश्वर शांति में है तो शांति अंदर में मिलेगी। ईश्वर ज्ञान में है तो अंदर में ज्ञान मिलेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, अंदर में एकाग्र होने से सर्वव्यापकता कैसे हम अनुभव करें ये ज्ञान होगा।
अभी तो लगता कि हम लिमिटेड हैं, तो एक सूत्र मिल गया कि हम पुरुष हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। और इस साइंस में देखिए मिलेगा आपको, जब हम पुरुष हैं तो हम ईश्वर के संतान हैं, तब क्या करें? अपने में एकाग्र होइए, सब मिलेगा। हमारा जेनेटिक करेक्टर सब ईश्वर का है। तब अपने में एकाग्र जब होते हैं, एकाग्र होते होते एक ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आया? अरे ये पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर है। ये चलो चित्र बनाएं, समझाएं। ये समझाने का तरीका है। प्यास लगी है, पानी क्या होता है? हम आपको चित्र से समझाते हैं। ये पानी है, तो क्या इसको पी पाएंगे आप? तो एक समझाने का तरीका है, इसको ऐसे तो समझिए। अंदर में जब प्रभु हैं, हम उनकी संतान हैं, वो इतना मानते हैं कि हमारे साथ ही हैं। तो हमारे साथ कैसे हैं उसी को देखिए। ये बीच में एक हमने चित्र बनाया और इसी को कहा कि यही हमारे प्रभु हैं। तो हमने इसको सफेद क्यों बनाया? प्रभु प्रकाश की तरह है। प्रकाश क्या होता है? ज्ञान। ये वाला प्रकाश नहीं। सफेद रंग ज्ञान को प्रकट करता है, ऐसी पेंटिंग है। तो हमने प्रभु को इस रूप में बना दिया। ठीक है, तो प्रभु कितने महान हैं। वही अपने से ही चीज़ों को निकाल करके बनाते हैं। वो पता चला कि हमको बनाना है देवता, हम गए बाहर से मटेरियल ले आए खरीद करके, उससे गढ़ करके देवता बनाए। तो अच्छा होगा कि प्रभु अपने अंदर की ही शक्ति और ज्ञान को लेकर के एक ऐसी रचना बनाए जिसको देवता कहते हैं। वो देवता होते कैसे हैं? देवता का अनुभव होता है, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे परमपिता ही सब रूपों में है। चलो एक रचना हुई, फिर प्रभु को ज्ञान है तो अनंत चीज़ों को बनाते हैं। अगली रचना हुई, वो ऐसे मानव को बनाए जो मानव लॉजिक से काम करते हैं। बर्थडे मनाते हैं, डिपार्चर डे मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी, ये सब मनाते हैं। तो ये तो होता ही नहीं। तो हम ऐसे रूप में बदल गए जो मानव हैं, जो कन्फ्यूज्ड हैं, द्वंद्व में रहते हैं। जन्म है तो मृत्यु है, इनको एहसास ही नहीं, हम जन्म नहीं लेते हैं न मरते हैं। चलो ये भी रचना बनाए। तो ज्ञान आ गया कि हम मानव के साथ कैसे रहें, मानव की सेवा कैसे करें। तभी ज्ञान होगा जब मानव को अंदर देखें। पूरी आबादी पृथ्वी की, उनको जब अंदर देखें तभी उनकी व्यवस्था कर पाएंगे हम, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए तीसरा है, ये तीसरा है जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, बैल, बकरी, शेर, चीता, भालू, ये सब जीव जंतु में आते हैं। हमको उनकी व्यवस्था करनी है, क्योंकि राष्ट्र चलाना है और राष्ट्र वो भी रहेंगे। कैसे करेंगे हम? पता चल गया कि जब पता चला कि हम ईश्वर के संतान हैं और ईश्वर में सब कुछ है, ईश्वर में सब कोई विराजमान है, तब अपने अंदर एकाग्र हुए। पता चला करे सारे जीव जंतु अपने अंदर हैं। ये 3 नंबर है। चलो और पेड़ पौधे, पेड़ों की रक्षा कैसे करें? जब तक पेड़ों को अंदर नहीं देखेंगे बाहर रक्षा नहीं कर सकते हैं। हमने क्रिया का खूब अभ्यास किया तो अंदर में संपूर्ण वृक्ष दिखाई पड़ गए। चाहे जहाँ हो, चाहे अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, कहीं पर भी हो। कुछ पेड़ ऐसे जो समुद्र में है, जो पानी में है, ये सब है। चलो ठीक है, तब अपने अंदर जब सभी पेड़ों की अनुभूति कर लिया तभी इनकी व्यवस्था कर पाएंगे। और फिर क्या है, ये 5वां क्या है? ये 5वां है जैसे सोलर सिस्टम, सौरमंडल, आकाशगंगा, तारामंडल, ये सब, पृथ्वी, सूरज, चांद, ये सब, पहाड़, नदी, समुद्र। हमें भी अगर राष्ट्र का नियम बनाना है तो पहाड़ सुरक्षित हो। अगर सब पहाड़ों को काट दीजिए तो पर्यावरण गलत हो जाएगा। तो कैसे पहाड़ पहाड़ रहे, नदी नदी रहे, तालाब भी रहे, झील भी रहे, कैसे करें? उसका नियम कैसे बनाएंगे? जब पहाड़ों को अपने अंदर देख लेंगे आप, जितने पहाड़ हैं, जितने समुद्र हैं, जितनी नदियां हैं, सब समुद्र आपस में मिले हैं। हिंद महासागर मिला हुआ प्रशांत महासागर से, अटलांटिक ओशन से, सब तो मिली हुई है। अलग कहाँ है? अलगाव तो हम कर रखे हैं ना। इस तरीके से जब पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर देखते हैं तब ज्ञान आ जाता है, अरे संविधान तो ऐसे बनना चाहिए। चलिए
हमें प्रेम करना है पहाड़ की, नदी की, समुद्र की, इन सब की, सबको प्रेम करना। कैसे प्रेम करें? हमें पृथ्वी को प्रेम करना। कैसे प्रेम करूं? पृथ्वी कैसे हुई है? देखिए, आसमान से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी जिससे हुई उसको मिला दीजिए उससे। तो पृथ्वी की जुताई की है तो उसमें आसमान गया, उसमें हवा गई, उसमें प्रकाश गया, उसको पानी सिंचाई किया, तो हमने पृथ्वी की सेवा किया। उस सेवा में क्या हुआ? पृथ्वी खुश हो गई, वहाँ फसल लगाइए, पेड़ लगाइए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का कम से कम इतनी देर तक 1 या 2 घंटा ऐसे पृथ्वी पर काम करे कि उसके अंदर से सूरज की गर्मी आ जाए। जैसे बाहर सूरज है ऐसे अंदर सूरज है। इस मेडुला के अंदर भी जब आप खेतों में काम करते हैं, अपने अंदर जो गर्मी आती है वो सूरज का प्रकाश है जो पृथ्वी को चाहिए। इसके अंदर जो पृथ्वी तत्व है सूरज का प्रकाश है, इसको पानी भी चाहिए। जब काम करिए जो पसीना आता है अपने अंदर, ये सब तत्व है जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, उसको पानी भी मिल गया। तो इस तरह से जब जमीन पर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एमपी एमएलए, कुछ भी हो, अनिवार्य है कि इतना पृथ्वी पर जमीन पर काम करे अंदर में सूरज का ताप हर जगह फैल जाए। जैसे पृथ्वी से पानी निकलता है ऐसे इतनी पृथ्वी की सेवा करें कि अंदर से जो जल का स्रोत है सतह पर आ जाए, जिसको पसीना कहते हैं। अंदर में हवा चाहिए। हम इस तरह से काम करें कि हमारी श्वास गहरी चलने लगे। हम इस तरह से काम करें तो जब ऐसा नियम कहाँ बना है? अरे भाई, हम तो बड़े हैं, नौकर चाकर रखे हैं। ये नियम नहीं होना चाहिए संविधान में। हाँ ठीक है, हमें 10 काम है। हम हमेशा, जब हर आदमी जब जमीन पर काम करेगा, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अगर जमीन पर काम करेगा, तो ऐसा नहीं रहेगा कि एक आदमी खेती ही कर रहा है, एक आदमी कंप्यूटर ही चला रहा है, एक आदमी ड्राइवर ही है। ये कौन सा पागलपन है? जो ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाएगा, जो कंप्यूटर और सिर्फ कंप्यूटर चलाएगा। प्रत्येक नागरिक के हो जाए, हर नागरिक कंप्यूटर भी चलाएगा, गाड़ी भी चलाएगा, जमीन पर काम करेगा, हर चीज़ करेगा वो। जब तक आप सब चीज़ नहीं करेंगे आपको आनंद नहीं आएगा। जिस आनंद की तलाश कर रहे नहीं मिलेगा। कहाँ बना है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नेशन का? संक्षेप में हम ये कहना चाहते हैं, क्रिया योग ध्यान करने से सब अपने आप हो जाएगा। जैसे जब हवाई जहाज उतरती है, अंदर कोहरा है, रनवे दिख नहीं रहा है, तो ऑटो लैंडिंग कर देते हैं, अपने आप उतर जाती है। इस तरह से याद रखिए, जब आप क्रिया योग करेंगे अच्छी तरह से तो अपने आप हम लोग इतने सक्षम हो जाएंगे कि ऐसा संविधान बनाएंगे कि पूछिए नहीं। गांधी जी कितनी निंदा होती है। गांधी जी नेहरू को कहे तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, पटेल को नहीं होने दिए। कहाँ कहे थे गांधी जी? उस लेक्चर को ही मिटा दिए, हटा दिए। तो पब्लिश तो हो गया है ना, किताब है वो सब लेक्चर भी है। जो 7 नंबर शाम की कक्षा के बाद गांधी जी ने कहा था जवाहरलाल रिजाइन कर दे। ये भी नहीं कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कुछ नहीं कहा। गुस्से में जवाहरलाल रिजाइन करें। पटेल फिट नहीं है गृह मंत्री होने के लिए, क्योंकि ग्रामीण लोगों को नहीं समझते हैं। अधिकांश 90% जनता गांव में है। हमारा जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब गांव से होगा, किसान वर्ग से होगा। तो लोग सोचे कि तो सब ये जो आवाज़ उठाएंगे पूरा देश, सारे किसान पगला जाएंगे, पूरा भारत भी हम लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारेगा। कहते अभी चले जाएं तो अच्छा है। इसे गांधी जब गोली लगी जानते हैं, उनके शरीर से गया नहीं था प्राण। डॉक्टर को आने में देरी किया गया, सब देरी हो गई। ए टू जेड क्यों नहीं प्रबंध कर दिए थे? जब 6 बार अटैक हो चुका था गांधी जी के ऊपर, 20 जनवरी के बम मारा था कोई, तो कहना चाहिए ना प्रेयर में जाने के पहले हर आदमी जांच करके जाए, कोई हाथ में हथियार नहीं ले जाएगा। नहीं किए। तो चलिए, जो गांधी की इच्छा थी हम लोग कर देंगे। ऐसा संविधान बनाया जाए जिसको हर देश पा करके खुश हो जाए।
जैसे कोई दवा निकलती है, अरे एक नई दवा का आविष्कार हुआ है, अब कैंसर ठीक हो जाएगा, टीबी ठीक हो जाएगा, सब लोग खुश होते हैं, केवल वो नहीं जो आविष्कार किए। ऐसे भारत ऐसा संविधान बनाए जिसको पाकर के देश के सभी लोग खुश हो जाए। ये आसान है करना, बस आप क्रिया योग करते रहिए, छोड़िए मत। ये सब हमारे जीवन काल में हो जाएगा, आपको नहीं पता होगा। अमेरिका के लोग रोते हैं जब मैं आता हूँ, कनाडा में आते हैं तो हम क्लास से भाग जाते हैं, हमसे मिले न, निकल के जा नहीं पाते हैं। सबसे कहते हैं कान बंद करिए, जैसे कान बंद किए तो मेडल की तरह दरवाजा बनाए हैं, धीरे से खोल के निकल जाते हैं, फिर मिलते नहीं हम किसी से, सीधा एयरपोर्ट पर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ इस देश में हमारा काम है इस जन्म में, क्योंकि भारत देश की एक महिमा है, हम पूरे विश्व को स्वीकार करते हैं। यही एक देश है जो सबको स्वीकार करता है। कितने लोग यहाँ हर देश के हैं, आप देखिए, यहीं पर देखिए, अमेरिका के, कनाडा के, ब्राजील के, सिंगापुर के, सब यहाँ तो हैं, यूरोप के। तो भारत देश जब ऊपर उठेगा ना, सबको लेके उठेगा। खास बात ये है, हम सुखी होंगे तो सब देशों को सुखी करते हुए सुखी होंगे। हम संपन्न होंगे, सभी देशों को संपन्न करते ही होंगे। इसे चाहे कितना भी कोई कष्ट तकलीफ क्यों न हो, इस देश में हमें इस जन्म में सेवा करनी है, और हम आप मिल करके इस देश को बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, इसमें शंका मत करिएगा। आप सन ऑफ गॉड है, आप ईश्वर का सन है, सूरज है। सन और डॉटर मत लीजिए, आप सूरज की तरह है, ईश्वर के पूर्ण ज्ञान को लेकर के वैसे बांट सकते हैं आप चंद्रमा नहीं है कि सूरज से प्रकाश मिला और भेजे तो चांदनी हो गई। हम नहीं कहते वी आर मून ऑफ द गॉड, नो, वी आर सन ऑफ द गॉड, SUN। इसी के साथ अब झंडारोहण का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और आपको 5 मिनट अभ्यास करा दें, पीसफुल हो जाइए, फिर झंडारोहण, फिर आज जनगणमन के बाद आज कार्यक्रम यहीं पर। We are going to practice 5 minutes how to love our own self, because my own self is son of God. If I love myself, God will be happy, because son will be happy. What is the science of loving self? We are going to practice. जब हम अपने को प्यार करते हैं तब भगवान खुश होते हैं, क्योंकि उनकी संतान में हूँ। अगर संतान सुखी तो प्रभु सुखी। प्रभु को खुश करने के लिए हम सब 5 मिनट अभ्यास करें। कोई कहता नहीं कि वे अरे हम उस बाप के बेटे हैं, आपको नहीं पता, हम इस बाप के बेटे, हमारी माँ का नाम ये, पिता का नाम ये है। और जानते हैं ये जो आया है ना, ये कहाँ से आया है? हमारे माता पिता से आया है। तो माता पिता खुश होते हैं कि नहीं? ऐसे भगवान को कैसे खुश करिए? आइए हम अभ्यास करें। And we say that, okay, my father is great. I am this child of such and such. My mother is great. You know, head to toe from where it came? From my parents. I love my parents. The parents become so happy. Then how to make a God happy? We are going to practice, because God is father of all fathers, mother of all mothers, guru of all gurus. आंखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. Feel head to toes. सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। सिर से पैर की अंगुली तक हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये अनुपम रचना ईश्वर की संतान है। जब हम ईश्वर को अनुभव करते हैं, इसकी अनुभूति को पा करके हम खुश हो जाते हैं कि हम परब्रह्म की संतान हैं। इसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, शक्ति है, शांति है, परम आनंद है, अमृत है। जब इस भावना, विचार और धारणा के साथ स्वरूप में एकाग्र होते हैं, तब हम ईश्वर को खुश कर देते हैं। तब हम ईश्वर के भक्त हैं, ऐसा समझिए।
When we feel head to toes, presence of head to toes, when we accept it is Son of God, S-U-N, Son of God, within all complete power, knowledge is power, knowledge of God. Within head to toes, all things exist which is in God. And when we feel head to toes, whatever we feel, pay highest respect and honor and demand nothing, and say we have everything in this unique way, head to toes. Within head to toes, what we feel is presence of knowledge, power, peace, bliss, immortality exists in God. Same thing we feel within head to toes because we are children of God. दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें. Place both palms on the posterior surface of head. सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. जो भी अनुभव हो रहा है, इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है. जो कुछ परब्रह्म के अंदर है, हम उनकी संतान हैं, वही सब इस अनुभूति में व्याप्त है. परब्रह्म में पूरा ब्रह्मांड है. सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया है. इन परब्रह्म there exists complete cosmos, all universes, and we are sons of God, children of God. We have all genetic character of God. Head to toes changes within what we feel. Within there exists complete cosmos, all universes, complete knowledge, power, peace and bliss. Now raise arms up. हाथों को ऊपर उठाएं. Clenched fist, open palm alternately. मुट्ठी बंद करें और खोलें. Move arms up and down. हाथों को ऊपर नीचे करें. हाथों को मोड़ें और फैलाएं. Fold arms, open arms. पैर की अंगुली से लेकर सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाए. हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है. क्योंकि अनुभूति ईश्वर के संतान की उपस्थिति है. ईश्वर के संतान में संपूर्ण चीजें विद्यमान है जो ईश्वर में है. इसलिए सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभव कर रही हैं, इस अनुभूति को स्वीकार करें. इससे पूरा ब्रह्मांड समाहित है. सारा वनस्पति जगत, जंतु जगत, जितने भी अणु परमाणु हैं, आकाश गंगा सौरमंडल, सब कुछ, जितने प्रकार के लोग दिखते हैं हम लोगों की तरह, जिसे हम मानव कहते हैं, सब इसी में समाहित है. और किस रूप में है? इनका रूप डिवाइन है, दिव्य है, अलौकिक है, जो अहिंसा का रूप है. Within head to toe, the complete cosmos, all universes exist in the form of power of non-violence, power of ahimsa. We are so fortunate. Each and every moment, what we feel is vibrations of ahimsa, non-violence. With this message, let us accept ourselves. We are sons of God. Sons means S-U-N, sons of God. आइए हम खुश हो जाए कि हम सब परब्रह्म की संतान हैं. इस खुशी के साथ साथ आइए हम नमन करते हैं परब्रह्म को. परब्रह्म का व्यापक रूप क्रियायोग के रूप में है.
क्रियायोग में अपनी भक्ति ही, परब्रह्म में भक्ति है. Let us bow down to Parbrahm. Parbrahm is manifesting in the form of Kriyayoga consciousness. Have complete devotion in Kriyayoga. It represents we have true devotion in God. अब हम बैठेंगे. Now we will sit. आंखें खोलें. Open eyes. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. क्रियायोग का विस्तार हो, पूरे विश्व का निर्माण हो. हम सब लोग एक दूसरे को नमन करें. बाउ टीच अदर.